Yeah. So today we are going to start with the previous concepts that we have covered till now regarding operating system. Uh, I think last class में हम लोगों ने about IPC पढ़ा था या IPC के बारे में एक डिस्कशन किया था छोटा सा. We have not touched yet IPC. शेड्यूलिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस we have been through, isn't it? And एक और टॉपिक छूट रहा, आई थिंक सो. What was that topic? Process control block, isn't it? So in the previous class we understood what is a process, how is a process different from a program, uh, what are the different life cycles or what are different stages through which a process goes through, uh, and what is the process control block, PCB. All these things we have learned till now. Any doubt regarding these concepts? नो सर. सर एक एक्चुअली प्रैक्टिस कर रही थी तो एक कन्फ्यूजन आया ये जो हमने गैंट चार्ट बनाया था तो एवरेज टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल रहे थे. वो एवरेज टाइम का सर एक बार फिर से रिकॉल नहीं हो पा रहा था, आप उसको बता देंगे? हाँ, वहीं से हम लोगों को आज शुरू करना है. ओके, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, एक छोटा सा पॉइंट एक और छूट गया ऐसे हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे व्हाइल द सिस्टम इज गेटिंग रेडीड. द टर्म इज कंटेक्स्ट स्विचिंग. ठीक है. सी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स का पढ़ते हैं. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, mobile operating system. So there are different types of operating systems we know. Again, it is a part of your syllabus, but having completed your BCA, I must admit that I have an expectation कि आप लोगों को at least इसका basic knowledge होगा, the different types of operating system that we are using these days. हम लोग जो पढ़ते हैं जब, तो हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे एक ऑपरेशन एटॉमिक लेवल पे परफॉर्म किया जा रहा है. तो जब एक ऑपरेशन एटॉमिक लेवल पे परफॉर्म किया जा रहा है तो उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, उसको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं और वो अपना काम कंप्लीट करके रिसोर्सेज को रिलीज कर देता है. द आइडिया इज वेरी सिंपल कि एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया रिसोर्सेज का, इफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, allocate, give the resources to the process will. Ma'am, I've made a request to join. Okay. Okay. Okay, so process has made some request for the resources. If the resources are available, the resources will be allocated to the process, and process will try to complete its task. Two things can happen: either the process will complete its task entirely and then release the resources. Otherwise, second thing that can happen, second scenario is that the while the process is trying to complete its task, some other process uh, tries to make a request that give me the processes, give me the resources. Okay, जो resource process 1 के पास है और process 1 अपना काम complete करने के लिए resources को utilize कर रहा है, उसी बीच में before it completes the task, process 1 को एक request आता है कि I need the resources that you have acquired. ये रिक्वेस्ट अगर किसी ऐसे प्रोसेस के द्वारा किया गया हो जिसका प्रायोरिटी प्रेसिडेंस हायर है एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रोसेस, तो वैसे लेवल पे, वैसे सिचुएशन पे all the resources of the process 1 will be allocated to the new process which is of higher priority, higher importance, higher weightage. Fine. सो अगर पहला सिनेरियो कंसीडर किया जाए जहाँ पे एक प्रोसेस अपना टास्क पूरा कंप्लीट करके निकल जाता है विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी रिलीज ऑफ द रिसोर्सेज इन बिटवीन, दैट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. अदरवाइज अगर बीच में उसको इंटरप्ट मिलता है और एक हायर या हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एक रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज का, तो प्रोसेस 1 को मिड वे में रुकना पड़ता है
it has to release the resources will be acquired by the new process of higher priority. वो अपना टास्क पूरा करेगा, पूरा करने के बाद जब वो रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, then the operating system will allocate the resources to the first process. First process will resume its task और वो अपना काम complete करके फिर resources को release कर देगा. So this kind of scenario where a process comes in, then again goes out without completing its task, then again acquires the resources and then completes its task. मतलब उसका अगर आना जाना लगा रहे, एक्सचेंज ऑफ प्रोसेसेस लगा रहे, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि दैट द प्रोसेसेस आर ऑफ प्रीएम्प्टिव नेचर, प्रीएम्प्टिव, ओके, जहाँ पे उसको एक प्रॉम्प्ट मिलता है, इंटरप्ट मिलता है, जिसके चलते रिसोर्सेज रिलीज करना पड़ जाता है और कोई सम अदर प्रोसेस विल बी देयर हु which will acquire the resources and try to complete its task. अब ये जो ट्रांजिशन जो होता है between the processes, so this transition is so smooth, so fast that the user gets to have an idea that the entire resources have been allocated to the user. For example, let's say uh, I'm writing some document on Notepad or WordPad or MS Word, and while writing it's a lengthy task, so I tried to play some music. हमने क्या किया, VLC मीडिया प्लेयर या कोई मीडिया प्लेयर को हमने ओपन किया, वहाँ पे सॉन्ग्स को एनलिस्ट कर दिया 10-15 सॉन्ग्स को, और वो सॉन्ग्स अपना प्ले हो रहे हैं पैरेलली बैकग्राउंड में, और एट द सेम टाइम हम अपना काम जो है MS वर्ड या टेक्स्ट विंडो पे काम कर पा रहे हैं. So there are two things happening right now. One is the speaker is throwing out the audio which is being played through a media player, and this media player is working in background. और फोरग्राउंड में, फोरफ्रंट पे हमारा जो MS वर्ड या फिर कोई टेक्स्ट एडिटर है जिसपे हम लोग अपना टेक्स्ट पूरा करना चाह रहे हैं रियल टाइम पे. सो टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. चलो ठीक है, ऐसा एग्जांपल कंसीडर किए जहाँ पे दोनों का जो रिक्वेस्ट था रिसोर्सेज का, अदर टू सेपरेट थिंग्स. एक MS वर्ड पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो रहा है, दूसरा एक MP3 या MP4 वर्जन का टाइप का फाइल प्ले किया जा रहा है. And both the things are happening at two different applications. One is for MS Word and another is for, let's say, a media player या VLC player. तो जब दो सेपरेट एंटिटीज हैं, टोटली अपार्ट, दोनों को रिसोर्सेज भी सेपरेट चाहिए है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गाना प्ले हो रहा था, then suddenly I thought of let's change the mood, let's change the types of songs. तो सेम टाइप पे हम अपना लिस्ट को चेंज कर दे रहे while the music is being played on. ये लिस्ट का चेंज करने से मेरे सॉन्ग के प्ले पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, और मेरा लिस्ट भी मेरा प्लेइंग लिस्ट भी जो क्यू में है वो भी सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है. सो अगर ऐसा ट्रांजिशन हम लोग देख रहे हैं जो कि रियल टाइम पे अकर हो रहा है विदाउट causing any impact on the current working processes, so this concept is known as context switching, where the resources are being allocated, या फिर ये जो switch हो रहा है between the processes ये इतने frequently हो रहा है कि यूजर को ऐसा फील होता है कि रियल टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल टास्क फुलफिल कर पा रहे हैं. बट इन रियलिटी the operating system is only handling one process at a time. ठीक है, one process at a time. ये बात हम लोग कब कर रहे हैं, जब हमारे पास सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल कोर प्रोसेसर है. अभी के टाइम में तो चलिए हमारे पास डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स जो आ जाते हैं स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स में. इनफैक्ट हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप भी जो आज के जमाने का है, i3, i5, i7 जनरेशन, those are also multi core processors. तो एक प्रोसेसर आपके पास है, हुआ करता था जिसमें एक टास्क एट अ टाइम होता था, बट ये मल्टीपल टास्क को इस स्पीड में करते थे, कि जस्ट होल्ड ऑन.
ओके, ठीक है। तो ये हो गया कंटेक्स्ट स्विच. सो यू हैव मल्टीपल प्रोसेसेस which are running in tandem in parallel, और रिसोर्सेज जब भी प्रोसेसर को मिलते हैं, प्रोसेस को मिलते हैं, वो अपना काम पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाहता है. So there is a fight going on between multiple processes to acquire the resources and try to complete its task. So this has to be managed uh, very constructively by the operating system. और operating system आज के टाइम में यही काम बहुत efficiently handle कर पाता है. Yeah, we do have the processors of very high speed. We do have the different types of memories such as RAM, ROM, cache memory. The external memories are there to compensate. But the operating system also has to be very efficient, and in current generation it is capable enough to handle uh, multiple jobs, multiple tasks at a time with the help of multiple cores that we have. Okay, so that was about context switching. Let's jump towards the process scheduling part. I'll share the screen. Just hold on. Okay, so this is the paint window, and we'll start quickly. Uh, Let us take an example of first come first served scheduling, FCFS scheduling. So there are different types of scheduling, जिनको primarily categorized किया गया into preemptive and non-preemptive scheduling. First come first served is purely a non-preemptive scheduling, जहाँ पे once a process gets the resources, it will complete the entire task and then only it will release the resources. Midway में वो resources को release नहीं करेगा. Okay, so today we are going to deal with the first one, that is first come first served scheduling. Okay, so mind it that these are the process scheduling algorithm, because we have different types of scheduling. Okay, process scheduling. So FCFS scheduling is there. Let us say there are certain number of processes. Okay. Let's say there's P1, P2. छोटा एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं, P3. Okay. Burst time. Okay, for P1, the burst time that is given is 24 units. For P2, we have, let's say, 5 units, and for P3, we have, let's say, 3 units. Okay, so 3 different times allocate किए गए हैं. So when we are trying to solve the FCFS scheduling, what we are trying to achieve, the question will be given as to using the FCFS scheduling algorithm, calculate the waiting time और एवरेज वेटिंग टाइम. ओके, इस तरह से दिया रहेगा, और हमें मिनिमम ये दो कंपोनेंट दिए रहेंगे न्यूमेरिकल में, दैट इज द प्रोसेसेस, हाउ मेनी प्रोसेसेस डू वी हैव, एंड the burst time. What is burst time? Burst time is the total time, total amount of time required by a process to complete its task. So we can say for process 1 it requires 24 unit time. यूनिट टाइम क्यों बोले? बिकॉज टाइम हैज नॉट बीन मेंशन कि मिली सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, मिनट है, आवर है, कुछ भी हो सकता है.
So for unit we are not considering, we are only thinking about the time duration कि P1 को अपना टास्क कंप्लीट करने में 24 यूनिट टाइम लगता है. Similarly, process P2 requires 5 unit time to complete its task, and process P3 requires 3 unit time to complete its task. ठीक है, idea simple. Now, there are certain components that we might require. Okay, just hold on. Okay, so first of all, before we move further, we require to prepare a Gantt chart. Okay, let's see how this Gantt chart is prepared. Okay, छोटा प्रोसेस है, इतने तक लेके चलेंगे. So for process P1 you can see the total amount of time that is required is 24 unit. बहुत ज़्यादा time ले रहा है, इसको हम लोग थोड़ा लंबा version तक चलाएंगे. So my Gantt chart will always start from 0. Okay, और पहला प्रोसेस कौन सा आ रहा है, ठीक है. तो सिंस यहाँ पे अराइवल टाइम हमें नहीं दिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे पता चलेगा विच प्रोसेस हैज अराइव्ड फर्स्ट. For that we require an arrival time, isn't it? Arrival time is missing in this example. Rather, I should have given the arrival time. Let us consider कि arrival time is 0, 1 and 2. Okay, 0, 1 and 2. At time interval 0 process 1 is arriving, at time interval 1 process P2 is arriving, and time interval 2 पे process P3 arrive कर रहा है. So at 0 interval पे we have only process P1, the only process available, so it will get the resources. अगर दो प्रोसेस होते, दोनों का सेम टाइम पे अराइव कर रहे होते, ठीक है, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है ऐसा अगर हमें मिल जाए, बट दैट प्रॉब्लम यू विल नॉट गेट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बिकॉज अगर दोनों का ही टाइम अराइवल टाइम सेम हो जाता है, दो या दो से अधिक प्रोसेसेस का, you won't be able to differentiate between the processes. Then the order will be totally dependent upon the operating system to decide कि कौन से प्रोसेस को पहले इंसर्ट करा देना है. मोस्टली हम लोग क्या करेंगे वैसे में, लेट्स से अगर प्रोसेस P1 और P2 दोनों टाइम इंटरवल 0 पे अराइव कर रहा है, तो विल गो विद द सीक्वेंस, P1 को पहले ले लेंगे, isn't it? या हो सकता है एल्गोरिदम में कुछ और इसमें एक्सेप्शंस होंगे जिसके बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर पाए कि जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा उसको ले लेगा. Okay, so the rule is not set yet. हमें बस different arrival time लेकर के अभी चलना है. So at time interval 0, we have process P1. P1 works for 24 unit time. 24 पे, ठीक है, 24 unit time पे आकर के रुका. Once it completes its task, it releases the resources. Now operating system ये देखेगा कि और कोई प्रोसेस या प्रोसेसेस हैं जो अभी अपना काम करने के लिए आइडल बैठे हुए हैं, रेडी बैठे हुए हैं. So it sees that process P2 and P3 are ready, available. इनमें से किसी एक को रिसोर्स मिलना चाहिए. Which one shall get the resource? Process P2, because as compared to P3, P2 का arrival time पहले है. Okay, so P2 is arriving earlier than process P3. But in truthness, in reality, if you see, हमारा प्रोसेस P1 जब 0 से 1 यूनिट टाइम और फिर 1 से 2 यूनिट टाइम तक जब चला था, तब तक हमारे पास P2 और P3 दोनों अवेलेबल हो चुके थे. इट्स जस्ट दैट कि वो 24 यूनिट टाइम तक काम करता रहा, तो P2 और P3 दोनों को वेट करना पड़ा. तो द मोमेंट प्रोसेस P1 रिलीजेस द रिसोर्सेस एट टाइम इंटरवल 24, प्रोसेस P2 विल गेट इनटू द Gantt चार्ट. प्रोसेस P2, अब P2 कितने देर चलेगा? P2 का काम है ही 5 यूनिट का, 5 यूनिट तक चला. नाउ 24 इज देयर, 24 में 5 यूनिट ऐड करेंगे तो कहां तक जाएगा? 29. At time interval 29, process P2 releases the resources. Now only process P3 is available. Process P3 will get the chance, it will insert. Okay, process P3 will insert. ये कितने समय के लिए काम कर रहा है? 3 यूनिट्स. So 29 के बाद स्टार्ट करें 30, 31, 32. सॉरी,
क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? नो सर। Thank you. Now, so since we have the processes, 3 processes are there, arrival time 0, 1, 2 ho gaya, and burst time has been given. Based on all these 3 criteria, 3 points, we were able to draw this Gantt chart. Okay, Gantt chart हम लोगों ने बना लिया. Now, what needs to be done next? Next is that we'll calculate the completion time. Okay, we'll calculate the completion time. Okay, completion time. So how are we going to see the completion time? Any idea, any guesses? What is completion time? एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है या किस टाइम इंटरवल पे वो निकल गया बाहर गैंट चार्ट निकल से? या इज इट सो? नहीं, दो अलग बात हो गया यहाँ पे. ठीक है, देयर सर आर टू किस सेपरेट. टाइम पे वो प्रोसेस कंप्लीट होकर के वो रिसोर्स को छोड़ रहा है, वो गैंट चार्ट से निकलेगा. जैसे Okay. 32 पे ये गैंट चार्ट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है. हाँ, so completion time will be 32 for each of the processes. नो No. नो सर. So for process 1, what will be the completion time? It will 24 unit time. 24. Yeah, 24, isn't it? For process P2, So as we can see, it is 29 unit time. 29. Any other guesses? No sir. Okay. Just hold on. Have I made something wrong over here? Okay. So 24 is there. For process P2, the completion time is the time interval where P2 is being released from the Gantt chart. So P2 is being released at which time interval? 29. Okay. And for process P3 we have 32. क्लियर है? वो गैंट चार्ट हम लोगों को देखना है. गैंट चार्ट में प्रोसेस कब रिलीज हो रहा है, किस टाइम इंटरवल पे, उसे लिख देना. दैट इज द कंप्लीशन टाइम. इज एज सिंपल एज दैट. सो बोलने में आई गॉट कंफ्यूज्ड while discussing. Is it clear now? Yes sir. Okay. Now, so completion time is done. Next thing that we need to calculate is TAT. ठीक है, TAT. TAT stands for turn around time. हम यहीं पे या ऊपर कहीं लिख देते हैं. TAT is turnaround time. Okay. Now, how are we going to compute TAT? TAT is calculated using a basic formula, that is completion time minus arrival time. Completion time CT minus arrival time. So for each process, we do have the completion time and we do have the arrival time. Okay. Now, follow this very carefully. For process P1,
our completion time is 29 minus arrival time. What was its arrival time? 0, isn't it? 0. So 29 minus 0, that is its turnaround time. That is 29. Similarly, turnaround time for process P2 would be sorry, So I've made 24 minus 0. yeah, I made a 24. mistake. It will be 24 minus 0, that is equal to 24. Okay, for process P2, it is its completion time is 29. 29 minus what is its arrival time is 1 unit. 28. And for process P3, it's 32 minus 2. Minus 2 is there. 2. It gets to 30. Okay, seems fair enough. Next, one last thing is there to be calculated. Next thing is we need to calculate the waiting time. Okay, waiting time. Okay, so waiting time कैसे calculate करते हैं हम लोग? Waiting time is calculated using the formula TAT minus BT, turnaround time minus burst time. Now we have the TAT and we have the burst time. दोनों को subtract कर देंगे. So I have hope that we are going to get the same value. Okay, so we have TAT as 24 minus burst time. Burst time is 24. That is equal to 0. Let me finish the table first, then I'll explain each and every component. How did we reach to that? And we have to prove. Okay, ये Gantt chart के थोड़ा prove भी करेंगे जो waiting time निकाल ये correct है. Then 28 minus the BT. BT is 5. So 28 minus 5 is how much? 23. Okay, and then for last one we have 30 minus 3. This is equal to 27. Okay, now once we have received these table values, we need to verify whether these values are correct or not. ठीक है, verify कैसे करेंगे आइए देखते हैं. It says the waiting time table says कि process P1 को wait नहीं करना पड़ा. ठीक है ना, उसको 0 मोमेंट वेट करना पड़ा. इससे क्या पता चल रहा है? प्रोसेस P1 को जब उसने रिक्वेस्ट किया था, उसी मोमेंट पे उसे रिसोर्स मिल गया. ठीक है, प्रोसेस P1 ने जब रिक्वेस्ट किया था, जब उसका अराइवल टाइम था, उसको उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिसोर्स मिल गया, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा. दैट्स व्हाई इट्स वेटिंग टाइम इज 0. ओके, फेयर इनफ. नाउ नेक्स्ट, process P2 was supposed to get its resources at time interval 1. But if you see Gantt chart में process P2 को resources कब मिल रहे हैं? At time interval 24. ठीक है, फिर से बोल रहे हैं प्रोसेस P2 को क्वेश्चन के हिसाब से टाइम इंटरवल 1 पे रिसोर्स मिल जाना चाहिए था, बट इन एक्चुअलिटी बिकॉज उससे पहले एक प्रोसेस आके बहुत देर तक काम कर रहा था, तो प्रोसेस P2 को टाइम इंटरवल 24 पे रिसोर्स मिल रहे हैं.
So it has to desperately wait for its time to get the resources. काफी लंबा समय उसको wait करना पड़ा. तो कितना समय wait करना पड़ा? You have the realistic time and you have the expected time जब उसको मिल जाना चाहिए था. दोनों को subtract करेंगे तो you get the same thing, that is 24 minus 1, that is 23. And exactly we have got the same thing, 23. सेम चीज आप खुद प्रोसेस 3 के बारे में भी वेरीफाई करके देख लो. प्रोसेस P3 was supposed to get at time interval 2, बट उसे मिल रहा है कब? एट टाइम इंटरवल 29. सो 29 minus 2 भी अगर हम करते हैं तो वी गेट द सेम थिंग, दैट द वेटिंग टाइम इज 27. एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. एनीवन? No, sir. एवरीवन क्लियर? ठीक है. Yes, sir. नाउ वेटिंग टाइम निकल गया, हमें निकालना था एवरेज वेटिंग टाइम, है ना. तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, कोई बता सकते हैं मैथ्स? तो तीनों को ऐड करके divided by 3. Thank you so much. Add all the waiting times 0 plus 23 plus 27 and divided by total number of processes, that is 3. So 0 plus 23 plus 27 whole divided by 3 will give you the average waiting time. Short and simple, सही है? कोई doubt? No, sir. So please, can anyone calculate and tell me what is the average waiting time for the given set of processes? Sir, So 16.6 16.6 ऐसा कुछ आएगा सर. points. अच्छा, 16.60 let us take. Yes, sir. 16.60. ओके. सो ये काफी एवरेज वेटिंग टाइम हमारा काफी हाई है. एवरेज वेटिंग टाइम क्या बता रहा है? ऑन एन एवरेज आपके ये सेट ऑफ प्रोसेसेस को कितना वेट करना पड़ रहा है टू गेट द रिसोर्सेज. So 16.60 unit time is a very huge amount of time for a process, for a set of processes to wait. Now why has the average waiting time been so high? It's purely because कि आपने सबसे पहले जिसको allocate किया resources उसका ही burst time execution time सबसे हाई था. ठीक है, उसका ही burst time सबसे हाई था. सो हायर एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस को ज्यादा वेट ज्यादा टाइम मिल गया रिसोर्सेज. तार ओके, ठीक है. और दूसरे प्रोसेसेस जो छोटे छोटे साइज के थे जिनको पहले हो जाना चाहिए था उनको काफी लंबा समय वेट करना पड़ा. वन थिंग आई डू, या आई वांट इट दैट यू ऑल मस्ट ट्राई, हम लोग इसको पूरा रिवर्स कर दें. सिंपली रिवर्स द टेबल. प्रोसेस P1 को आप दे दो 3 यूनिट टाइम, प्रोसेस P2 को दे दो 5 यूनिट टाइम और प्रोसेस P3 को दे दो 24 यूनिट टाइम. ठीक है. आई एम नॉट चेंजिंग एनी क्वांटिटी, आई एम जस्ट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द क्वांटिटीज. सबसे छोटे बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को पहले दे दो चांस. सो प्रोसेस P1 को अब दे दो 3 यूनिट टाइम, प्रोसेस P2 को दे दो 5 यूनिट टाइम एंड प्रोसेस P3 को कर देते हैं 24 यूनिट टाइम द बर्स्ट टाइम. And now same sequence I'll give you 2 to 3 minutes. Kindly solve and do let me know what will be the final average waiting time. Question clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I'm giving you 2 to 3 minutes. Please solve it out.
Is it done? Yes, sir. Okay. So what was the average waiting time that you have received? So 2.33. Any other answer, Sarita, Kushi? Anyone? Okay, let us consider that this is the correct answer. So सी टू इट दैट हम लोगों ने बस सीक्वेंस चेंज कर दिया और सबसे छोटे प्रोसेसेस को पहले चला दिया और सबसे बड़े प्रोसेस को हम लोगों ने लास्ट के लिए रख दिया. ड्रास्टिकली हमारा कितना अमाउंट ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम बच गया है. 16.60 और 2.33 बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कंप्यूटर के टर्म्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो. इमेजिन करो कि 16.60 आवर्स रहता है कि 16 घंटे 7.6 आवर्स में जो काम कंप्लीट हो रहा है उसी काम को 2.33 आवर्स में दूसरे तरीके से करने से मिल पा रहा है रिजल्ट. ओके, सो ये एफसीएफएस में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था. वन टर्म आई एम जस्ट स्टेटिंग, आई एम नॉट राइटिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज नोट इट डाउन. द टर्म इज कॉन्वॉय इफेक्ट, CONVOY, कॉन्वॉय इफेक्ट. ओके, कई बार इंटरव्यू में या फिर 2 मार्क्स में कहीं पूछ देता है व्हाट इज कॉन्वॉय इफेक्ट. कॉन्वॉय इफेक्ट क्या चीज बोलते हैं? थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे हमारे टाटा मोटर्स के फैक्ट्री से वो ट्रक के इंजन्स निकलते हैं, चेसिस निकल करके आता है और उसे सप्लाई कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो परचेजर रहते हैं उनके पास चला जाता है. और हाईवे में जब ये लोग निकलते हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां हैं तो जाम लग सकता है. इनके चलते छोटे छोटे गाड़ियों को क्या हो जाता है, वेट करना पड़ जाता है. प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय निकलता है, प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय निकलता है, तो उनकी एक एरिया क्रॉस करने से पहले उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है, सभी ट्रैफिक्स को रोक दिया जाता है, रास्ता क्लीन कर दिया जाता है ताकि कॉन्वॉय आसानी से निकल जाए. तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग का तो साइकिल था, हमारा तो बाइक है, हमें तो बस रोड क्रॉस करके ऑफिस जाना था, हमें क्यों डिले कराया जा रहा है. ठीक है ना, एक अगर आदमी जा रहा है तो उसे भाई जाने दिया जाए, क्यों रोका जाए बीच में. बट सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से वहां पे प्रोटोकॉल है कि आप ट्रैफिक को रोक दोगे. तो एक बड़ी गाड़ी, एक इम्पोर्टेंट गाड़ी को जाने के लिए दूसरे कई सारे छोटी गाड़ियों को रोक देने से एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कंसिडरेबली हाई हो जाएगा. खुद रियल लाइफ में सोच करके देख लिया जाए. ठीक है ना. लेकिन यही चीज अगर हम लोग कर देते कि छोटे छोटे प्रोसेसेस जो है उनको चला दो, उनको एग्जीक्यूट कर दो ताकि वो वेटिंग में रहे ही ना, तो लास्टली जब लास्ट प्रोसेस जो सबसे बड़ा प्रोसेस होगा अगर उसको रिसोर्स मिलेंगे तब तक तो कोई छोटे प्रोसेस बचेंगे ही नहीं वेटिंग में जाने के लिए. तो लास्ट में जब कोई प्रोसेस बचा ही नहीं वेटिंग में जाने के लिए तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम तो ऐसे ही रिड्यूस हो चला होगा. कभी इस बात को प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर किसी गैंट चार्ट के थ्रू ड्रॉ करके इमेजिन विजुअलाइज करके देखिए. डेफिनेटली विल गेट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज कॉन्वॉय इफेक्ट. तो कई बार पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज कॉन्वॉय इफेक्ट एज इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग. सो एफसीएफएस के बेसिस पे ये होता है, दूसरे शेड्यूलिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होती है. इज इट क्लियर व्हाट इज कॉन्वॉय इफेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू. एक लास्ट टॉपिक अभी इधर देख ले रहे हैं, इसी का एक्सटेंशन है. अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम मिल जाता है, सी a new set of processes are given, PID मतलब process ID. so we have 4 processes, P1 P2 P3 P4. सबका अराइवल टाइम दिया, सबका बर्स्ट टाइम दिया, छोटे छोटे प्रोसेसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट द गैंट चार्ट फर्स्ट. इससे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, गैंट चार्ट प्रिपेयर करेंगे. आई वांटेड टू शो यू ऑल समथिंग, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस गैंट चार्ट. ओके, so as discussed earlier, at time interval 0, ठीक है, हमें टेबल देखना है टाइम इंटरवल 0 पे कोई प्रोसेस अराइव किया है क्या. हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर व्हिच आर अराइविंग एट टाइम इंटरवल 0? ओनली वन प्रोसेस इज देयर, दैट टू प्रोसेस P1. सो गैंट चार्ट में हम प्रोसेस P1 को इंसर्ट करेंगे. ओके, P1 इंसर्ट हुआ. अगेन ये प्री
नॉन प्रीम्प्टिव टाइप का शेड्यूलिंग है, तो अपना पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद ही रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। तो P1 अपना पूरा टास्क कंप्लीट किया और यहाँ पे 2 इंटरवल टाइम पे निकल गया। Why at 2 इंटरवल टाइम? बिकॉज द बर्स्ट टाइम ही 2 इंटरवल का दिया हुआ, तो 0 से 1 एंड 1 से 2 तक चला प्रोसेस P1। ओके फाइन। By the time process P1 was completing its task, process P2 just arrived at time interval 1, है ना। हम फिर से बोल दे रहे, जब मेरा प्रोसेस P1 अराइव हो रहा था या कंप्लीट होने वाला था, सॉरी, अपना टास्क कर रहा था, तभी टाइम इंटरवल 1 पे प्रोसेस P2 अराइव हो गया। नाउ P2 इज वेटिंग एट टाइम इंटरवल 1 कि हमको रिसोर्स मिलेगा, बट एट टाइम इंटरवल 1 सेम रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड टू प्रोसेस P1। तो जब तक P1 अपना काम कंप्लीट करके रिसोर्स रिलीज नहीं करता, प्रोसेस P2 हैज टू वेट। ठीक सही टाइम इंटरवल 2 पे प्रोसेस P1 ने अपना काम कंप्लीट करके रिलीज कर दिया रिसोर्स को, और वहां पे क्या होगा, अब प्रोसेस P2 will get into the resources, okay, will get the resource, और ये कहां तक काम करेगा, इसका 2 यूनिट का काम है, तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 और यूनिट चलेगा, मतलब 4 यूनिट पे निकलेगा। तो प्रोसेस P2 अपना काम पूरा करके रिसोर्स रिलीज कर दिया टाइम इंटरवल 4। नाउ लुक इनटू द टेबल, क्या ऐसा कोई भी प्रोसेस है जो 4 यूनिट टाइम पे अराइव किया है या उससे पहले अराइव कर चुका हो लेकिन अभी तक यूज नहीं हुआ हो? नो सर। है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऐसा कोई प्रोसेस आया ही नहीं है जिसको हम गैंट चार्ट में या रिसोर्सेज एलोकेट कर पाए। सो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये 4 से 5 तक, ठीक है, 4 से 5 तक एक यूनिट ऑफ टाइम ये वेटिंग में चला जाएगा, आइडल हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग को मार्क कर देना है, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रश लाइन से मेंशन कर देते हैं कि दैट टाइम हैज बीन अनयूटिलाइज्ड, यहाँ पे सिस्टम आइडल चला गया एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए। वाई एक सिंगल यूनिट ऑफ टाइम? बिकॉज वी सी कि एट टाइम इंटरवल 5 प्रोसेस P3 is arriving, so P3 will now get the resources, P3 will now get the resources, it will try to complete its task। ये कहाँ तक चल रहा है, 5 से शुरू हुआ, 3 यूनिट ऑफ टाइम, then 10 by the time process P3 was supposed to complete its task at time interval 8, 8 कैसे आया यहाँ पे, anyone? सर क्योंकि P3 का बर्स्ट टाइम 3 था। थैंक यू, वेरी गुड। प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम 3 यूनिट्स था, तो 5 से स्टार्ट हुआ, 3 यूनिट तक चला, तो 8 पे निकल गया। नाउ वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन प्रोसेस, दैट इज P4। P4 विल स्टार्ट इट्स टास्क, ठीक है, और ये कहाँ निकल जाएगा, 4 यूनिट्स तक चलना है, तो 8 से 4 मतलब 12 यूनिट्स टाइम पे कंप्लीट होके निकल जाएगा। So this is a new type of Gantt chart where एक दो प्रोसेसेस के बीच में एक आइडल टाइम भी चला गया और हमको उसको भी कंसीडर करना पड़ रहा है। ओके, आप लोगों के लिए ये टास्क बच जाएगा कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल करके देखिए एंड सी टू इट, क्या वो जो 1 यूनिट टाइम का जो मेरा इंटरवल चला गया, फ्री इंटरवल, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कैलकुलेशन पे? ठीक है, आप लोगों के लिए ये टास्क रहेगा नेक्स्ट क्लास तक के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। So this is all about FCFS scheduling. Next class में I'll introduce you to shortest job first. उसका दो वर्जन मिलता है, नॉन प्रिमिटिव एज वेल एज प्रिमिटिव। सो अगेन नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्लासेस जहाँ पे हम लोग शेड्यूलिंग को कंप्लीट कर लेंगे। पर्सनली आई डू फील दैट शेड्यूलिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसका न्यूमेरिकल बहुत आसान है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द टेबल एंड द गैंट चार्ट, उनके बीच में अगर रिलेशन सही से बैठ जाते हैं देन आपका इक्वेशन बैठ जाएगा। okay, so try to solve these things if possible, also come prepared about the shortest job first या primitive and non primitive के बारे में कुछ अगर आपके पास notes या ideas होंगे, try to come up, at least be prepared for the next class. I hope so we could be keeping the next class tomorrow also for operating system.
Okay, any doubt till now? No, sir. Okay, so that's it from my side. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Thank you, sir.